Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था and the name of that particular series of lecture is beta adrenergic receptor blockers. So from our previous video lectures we understood कि ये जो beta adrenergic receptor blockers होते हैं we can classify these beta adrenergic receptor blockers into three important generations. The very first one is known as first generation beta adrenergic receptor blockers, which is a non-selective beta adrenergic receptor blockers. ये जो ड्रग्स होते हैं वो दोनों बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. दैट इज ये जो ड्रग होंगे वो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे as well as they will block our beta 2 adrenergic receptor. Then we saw the second generation beta adrenergic receptor blockers and ये जो beta second generation beta adrenergic receptor blockers होते हैं they are mainly selective cardioselective beta adrenergic receptor blockers. अब ये जो cardioselective जब मैं बोलता हूँ so definitely cardiac muscle पे we have a very good concentration of our beta 1 adrenergic receptors. So ये जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं दे आर बेसिकली नोन एज कार्डियोसेलेक्टिव बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स. Then we saw few important properties of our beta adrenergic receptor blockers. For example, some drugs is having intrinsic sympathomimetic properties, some is having membrane stabilizing property. So let us see कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अवर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स. So in our today's video lecture we are going to understand the concept of water soluble beta adrenergic receptor blockers. Then we will see the concept of third generation beta adrenergic receptor blockers. Then finally we are going to see the indication of our beta adrenergic receptor blocker. And finally we are going to see कि ये जो beta adrenergic receptor blockers होते हैं वो कौन से कंडीशन में हमें अवॉइड करने चाहिए. That is contraindications of our beta adrenergic receptor blocker. So let us start with the concept of water soluble beta adrenergic receptor blockers. Now talking about the water soluble beta adrenergic receptor blockers, ये जो ड्रग्स होते हैं they are mainly excreted via kidney and ये जो ड्रग्स होते हैं they are not basically reabsorbed. So just think कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है, अगर किडनी अगर फेल हो गई डेफिनेटली ये जो ड्रग्स होंगे वो हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे. अगर ड्रग एक्सक्रीट आउट अगर हमारे बॉडी में से नहीं हो रहे हैं सो डेफिनेटली देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग एंड उसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है. सो ये जो हमारे वाटर सोल्यूबल बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं दे आर मेनली एक्सक्रीटेड वाया किडनीज. सो अगर कोई पेशेंट में अगर इफ अ पेशेंट्स किडनी इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग सो ये जो ड्रग्स है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे एंड उसके वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग है हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा एंड उसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है. इसीलिए you need to remember a very important point about our water soluble beta blockers, that is they are contraindicated in the condition of renal failure. Now one important thing, these are the drug which are water soluble beta blockers. So कोई भी ड्रग अगर water soluble होती है so definitely it is not going to cross our blood brain barrier. अगर एक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस नहीं करती है सो डेफिनेटली एक हमारे पास एडवांटेज आ जाता है. दैट मींस दी नो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे. क्यों? सिंपली बिकॉज ये जो ड्रग्स होते हैं दे आर नॉट क्रॉसिंग अवर ब्लड ब्रेन बैरियर. नाउ लेट अस सी कि ये जो वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं. So we have mainly three important drugs. The very first important drug is known as atenolol. The second drug is our nadolol
and the third one is sotalol. Now the main point about this drug is ये जो nadolol होता है that is considered as the longest acting beta adrenergic receptor blocker. Now shortest acting कौन सा beta blocker है? So the answer is we have esmolol. ये जो esmolol होता है this is shortest acting beta adrenergic receptor blocker. Now the question is कि ये जो esmolol होता है इसकी एक्शन क्यों शॉर्ट है? Simply because it is metabolized by a very important enzyme and the name of that particular enzyme is pseudocholine esterase. So इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत रैपिड होती है and that metabolism is mainly due to the enzyme that is pseudocholine esterase. इसके वजह से जो एस्मोलॉल की जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है. इसीलिए दिस पर्टिकुलर एस्मोलॉल is considered as a shortest acting beta adrenergic receptor blocker. Now moving on to our next important concept and that is third generation beta adrenergic receptor blockers. Now I told you कि first generation beta adrenergic receptor blockers में ऐसे ड्रग्स आते हैं which are non-selective in nature. Second generation में वैसे ड्रग्स आते हैं which are considered as cardio-selective. Now let us see कि थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में कौन से ड्रग्स बेसिकली आते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दिस आर दोज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर विच इज हैविंग वेसोडाइलेटेटरी प्रॉपर्टी. नाउ अगर कोई भी ड्रग अगर वेसोडाइलेटेटरी प्रॉपर्टी अगर उसको शो करना है सो इट हैज टू block our alpha adrenergic receptor. Now the question is why? We know कि ये जो blood vessel होते हैं वहाँ पे we have a very good concentration of alpha 1 adrenergic receptor and we have a very good concentration of our beta 2 adrenergic receptor. जब हम beta 2 adrenergic receptor को stimulate करते हैं what it will do? It will dilate our blood vessel. एंड जब हम अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं इट विल परफॉर्म वेजोकंस्ट्रिक्शन. सो अगर एक पर्टिकुलर बीटा ब्लॉकर है विच इज शोइंग वेजोडाइलेटेटरी प्रॉपर्टी दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ड्रग इज ऑल्सो ब्लॉकिंग अवर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. सो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ साथ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं. And by blocking the alpha adrenergic receptor, it is showing the vasodilatatory property. वैसे ड्रग्स को हम थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में इंक्लूड करते हैं. So once again, coming back to our concept, that is third generation beta blockers. They are those beta adrenergic receptor blocker which is having vasodilatatory property. Now इसकी mechanism of action क्या है? So as I told you, they work by blocking both beta adrenergic receptor as well as alpha 1 adrenergic receptor. Now what are important drugs which are coming under the categorization of our third generation beta adrenergic receptor blocker? So we need to understand the name of two important drugs. Very first one is known as labetalol and the second one is known as carvedilol. Now some important few special points we need to remember about our drug that is carvedilol. Now ये जो carvedilol drug होती है it is also having calcium channel blocking property and also this particular drug that is carvedilol is also having antioxidant property. So ये जो drug होती है वो oxidative stress कम करने के लिए useful है. Now moving on to our next important segment that is what are the indications of our beta adrenergic receptor blocker. Now indication का क्या मतलब होता है? Indication का basically मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर पेशेंट में दे सकते हैं. सो लेट अस सी कि कौन से ऐसे डिजीज कंडीशन होते हैं वेयर वी आर गिविंग द पेशेंट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. सो इंडिकेशंस में we can divide our indications into two important categories.
Very first one is cardiac uses, and the second one is our non-cardiac uses. So let us see what are all important cardiac uses of our beta blockers. So definitely जितने भी cardiac condition है वहाँ पे we can use our drug that is beta blockers. So ये जो beta blockers होते हैं they are very well useful in the condition of hypertension. They are useful in the condition of myocardial infarction. They are also used in the condition of arrhythmias, angina, congestive heart failure, as well as they are also useful in the condition of cardiac myopathy. These are the cardiac uses of our beta adrenergic receptor blockers. Now let us move on to our non-cardiac uses. Non-cardiac uses में this particular beta adrenergic receptor blockers, they are useful in the condition of performance anxiety. Now the question is performance anxiety में क्यों हम beta adrenergic receptor blockers को use कर सकते हैं? So let me give you a very simple example. Let's suppose अगर आपको किसी ने बोला है कि बहुत सारे लोगों के सामने आपको सिंगिंग करना है या फिर डांस करना है, so definitely एक fear आता है. And when you have anxiety, what are all the important signs and symptoms? So जो signs and symptoms होंगे, that will be tachycardia, that will be palpitation, that will be severe sweating. So ये सारे के सारे जो signs and symptoms को tackle करने के लिए we are giving beta adrenergic receptor blockers. So this particular beta adrenergic receptor blockers can be useful in the condition of performance anxiety. Now moving on to our few next important non-cardiac uses, and that is the second one is known as thyrotoxicosis. Now thyrotoxicosis में भी same condition होती है. When we will be dealing with the concept of thyroid, I will explain you कि what do we mean by the thyrotoxicosis and वहाँ पे beta adrenergic receptor blockers हम कैसे use कर सकते हैं. Then we all know कि this particular beta adrenergic receptor blockers they can be useful in the condition of glaucoma. Then akathisia. This akathisia, when we will be dealing with the condition of schizophrenia, at that time I will tell you कि ये जो condition होती है उस पे beta adrenergic receptor blockers कैसे काम करते हैं. Then it can also be useful in the condition of migraine and essential tremors. Now moving on to the concept of contraindication of our beta adrenergic receptor blockers. Now beta 1 adrenergic receptor कहाँ पे present होते हैं? So we all know that our human heart is very well decorated with our beta 1 adrenergic receptor. Now ये जो beta 1 adrenergic receptor होते हैं they are very well concentrated on our sinoatrial node. It is very well concentrated on our atrioventricular node and it is very well concentrated on our ventricles. Now this particular beta 1 adrenergic receptor blockers क्या करते हैं? They will decrease the heart rate, they will decrease the atrioventricular conduction and they will also decrease the contractility. So अगर एक condition है, for example we have sick sinus syndrome. Now what is this sick sinus syndrome? We know कि जो heart rate होती है that is very well regulated by our sinoatrial node. So अगर sinoatrial node ही अगर sick है, definitely जो person की heart rate है वो कम है. ऊपर से अगर हमने beta blocker दिया है, that beta blocker is also having reduction in the heart rate. So person की condition और भी ज़्यादा worsen हो सकती है. So इसीलिए in the condition of sick sinus syndrome, we are not giving the patient beta adrenergic receptor blockers. Now moving on to our next important concept, that is atrioventricular block. Now in that atrioventricular block, already the person is having a blockage. अगर हमने वो patient में which is having the atrioventricular block, उसमें अगर हमने patient को beta receptor blocker अगर दिया, it will further reduce the atrioventricular conduction and person की जो problem है वो और भी ज़्यादा worsen हो जाएगी. So in the patient who is having atrioventricular blockage, we are not giving the patient beta blockers. Then third one, that is congestive heart failure, and especially in acute congestive heart failure,
ऑलरेडी जो पर्सन का हार्ट है दैट इज फेसिंग अ डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रैक्शन, एंड फर्दर अगर हमने बीटा ब्लॉकर वो पेशेंट में दिया, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, इट इज रिड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल. सो ऑलरेडी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉब्लम, एंड अगर ऊपर से हमने उसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर अगर दिया, सो फर्दर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी and it will worsen the condition of the patient. So in the condition of acute congestive heart failure, we are not giving the patient beta adrenergic receptor blockers. Now we all know कि ये जो beta 2 adrenergic receptors होते हैं, they are basically जो beta 2 blockers होते हैं, they are contraindicated in the condition of asthma, they are contraindicated in the condition of diabetes mellitus. It is contraindicated in the condition of peripheral vascular disease, and also it is not given, or we can say it is having a contraindication in the condition of variant angina. ये जो चारों के चारों जो conditions हैं, उसका जो explanation है, I have detailed that particular explanation in my previous video lectures. So ये जो contraindications है of our beta 2 adrenergic receptor blockers, already it has been covered. So that's it for today's video lecture. I hope यहाँ तक आपने video lecture देखा है. So definitely you like this particular video lecture. Please consider subscribing to my YouTube channel, like this video and share it with your friends. See you in the next video presentation. Till then, see ya, bye bye. Have a good day.